Good evening everybody, welcome to Concepts of Mathematics. So in the previous class we have discussed about what is an algebraic expression, what is a pattern, what are the difference between the variable and the constant. And today we will learn about what is a polynomial. Okay, so ajira class ame padiba kaha ko ame kon kahiba polynomial. So let's start. What is the first one? We have to know what is the definition of a polynomial. कहा को हमें polynomial कहिबा देखिबा ता डेफिनेशन कोन ए polynomial is an algebraic expression ताले गोटे polynomial ता कोन हेतिबो गोटे algebraic expressions हेतिबो this is the first point you have to remember it is an algebraic expression clear then coming to the next part which contains a coefficient a variable and exponent so ताले हमें कोन जानिले that a polynomial is an algebraic expression okay जहारा कौन कौन अच्छी गोटे variable अच्छी coefficient अच्छी and a exponent अच्छी clear but the condition is that the exponent must be a non-negative integer always keep in mind the exponent of the algebraic expression must be a non-negative integer ता माने हमें जो algebraic expression नोबा जार गोटे वेरिएबल थिबो कोएफिशिएंट थिबो और एक्सपोनेंट थिबो बा पावर थिबो से पावर टा केबे भी नेगेटिव होबनी आ सब बेले गोटे इंटीजर हेतिबो बुझियला ता माने कोन मने करो मोटे एग्जांपल लेली 3x to the power 3 okay so in this example I have x is the variable this is the variable part ताले से एटा कोन कहबा हमें कोएफिशिएंट कहबा बुझियला अब जो रिमेनिंग पार्ट रहला एटा को हम कोन कहबा एक्सपोनेंट कहबा अच्छा वर्तमान जो एक्सपोनेंट हमें नेले ए एक्सपोनेंट ता कोन पॉजिटिव ना नेगेटिव पॉजिटिव ओके तापर एटा गोटे इंटीजर ना नहीं यस इट इज एन इंटीजर ताहले कोन हेते दरकार एक्सपोनेंट ता पॉजिटिव हेतिबो प्लस गोटे इंटीजर हेतिबो फर्स्ट हमें देखिबा इंटीजर काहा को आजे देखो एटा को इंटीजर को आजे ना नहीं 0 एपटे -1 -2 डॉट 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 एंड राइट हैंड साइड पे 1 2 ओके दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर एमन को इंटीजर को आजे सो एक्सपोनेंट गोटे कोन हेतिबो पॉजिटिव हेतिबो इंटीजर हेतिबो सो पॉजिटिव इंटीजर काहा को हमें कहबा देखो एटा पॉजिटिव ना नहीं 0 रे गोटे पॉजिटिव ना नहीं सो 0 रु आरंभ कर कि इनफाइनाइट पर्यंत हमें एक्सपोनेंट को नहीं पारिबा you must be clear about that the exponent always starts from 0 up to infinity okay it can never be negative the exponent केबे भी नेगेटिव होबो नै बुझियला कि नै सब बेले कोन हेतिबो पॉजिटिव हेतिबो दरकार आ उटे इंटीजर हेतिबो फ्रैक्शन हेले होबो नै एक्सपोनेंट केबे भी उटे फ्रैक्शन होबनी हम लिखि परिबन जे हाफ माने लिखि परिबन x टू द पावर 1/2 ना लिखि परिबानी काहे कि ना एक्सपोनेंट केबे गोटे फ्रैक्शन होबनी सब बेले गोटे इंटीजर हेतिबो बुझिला नै इट मस्ट बी ए इंटीजर एंड व्हिच इज नॉन नेगेटिव माने पॉजिटिव ओके सो दिस इज क्लियर तले हम फर्स्ट बटन जानिबे पॉलिनोमियल कोन सो पॉलिनोमियल गोटे कोन गोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहार कोन रहइबो कोएफिशिएंट रहइबो वेरिएबल रहइबो आ एक्सपोनेंट रहइबो जहार एक्सपोनेंट सब बेले गोटे पॉजिटिव इंटीजर हेतिबो ओके देन नेक्स्ट पढिबा दैट इन्वॉल्व्स इन फोर टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस ओके व्हिच इन्वॉल्व्स द कोएफिशिएंट द वेरिएबल एंड द एक्सपोनेंट these three terms are involved in four type of operations ए जो तीनटा जिंस हमें पढिले वेरिएबल कोएफिशिएंट आ एक्सपोनेंट माने चारि प्रकार ऑपरेशन द्वारा इन्वॉल्व हेतिबे ऑपरेशन केतरा अछि कि हमरो चारटा अछि सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन yes or no yes so all these three types of terms are involved in four types of operations माने समान को भितरे आइदर प्लस थिबो बा पॉजिटिव थिबो बट दे आर एडेड or they are being subtracted or multiplied or divided okay then what are that addition subtraction multiplication and division okay so definition एबे क्लियर हे गला
कहा को हमें कहबे polynomial. So polynomial first of all is an algebraic expression. Suppose I am writing a expression 2x to the power 5. See, it is an algebraic expression. Yes or no? Yes, it is an algebraic expression. And in this algebraic expression, what we have? We have a variable, we have a coefficient, and we have a exponent. So can it be a polynomial? Yes, it will be a polynomial. Why? Because it satisfies all the conditions of a polynomial. ये polynomial सबु जगह condition को satisfy करूचे. बुझियाला कि नहीं? काहे satisfy कला? देखो यार coefficient भी रहला, variable भी रहला, exponent भी रहला, और exponent टा positive भी, और integer भी. Okay? So it may be or it must be a polynomial. Here, one more example we can take. Minus 3y to the power 1 by 5. अच्छा, इटे गोटे पॉलिनोमियल हे परिबो कि नहीं हम वेरीफाई करबा देखिबा. अच्छा, ये वेरिएबल की है, y is the variable. Okay, coefficient is -3. काहे कि कहले whenever you are getting or you are going to find the value of coefficient, you have to put your hand over the variable, and what is remaining, that is known as coefficient. Okay, so this is variable, this is coefficient, then the remaining term is known as exponent. Okay, so it is algebraic expression nahi paribo. Yes, but देखो इस तरह तीनटा कंडीशन को satisfy करछ ना. Variable अछि, yes, satisfied. Coefficient अछि, yes, satisfied. Exponent अछि, yes, satisfied. But it must be a non-negative. So it is negative की ना, it is positive तले ये भी satisfied. But it must be an integer. But 1 by 5 गोटे integer की? No, it is a fraction. Since it is a fraction, so it must not be a polynomial. तले एटा केबे गोटे polynomial हबनी. बुझियला? आ गोटे क्वेश्चन नै कि हम बुझेबा. माने गला नेले -3 by 5 x to the power 1.3. Okay, so here you see it has variable. Variable को छाड़ देले आ कोन अछि, एटा को कोन कहै coefficient, and this one is known as exponent. Okay, so it satisfies condition, first condition, that it has a coefficient. It satisfies the second condition, that it has a variable, and it also satisfies the third condition, that is it has exponent. But does the exponent is an integer? Exponent out integer की है थी? Exponent की है थी? 1.3 it out integer की? No, it out कौन? This is a decimal number. Okay, so decimal number केबे भी गोटे exponent हे परिबो नाही. जेतो डेसिमल नंबर केबे एक्सपोनेंट ही परिबनी, ताले टोटल ता गोटे पॉलिनोमियल हबो की? नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. सो क्लियर हे गला जे काहा को हमें पॉलिनोमियल कहिबा जहार एक्सपोनेंट ता पॉजिटिव हेतिबा और इंटीजर हेतिबो. तापर भी गोटे जिंस देखिबा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल भितर को चिन्ह अछि, किछ नै माने को चिन्ह अछि, मल्टीप्लाई चिन्ह अछि. हमें जानिबा दरकार जे सेमानक भितर आइदर एडिशन थिबा दरकार or subtraction or multiplication or division. So आंक भितर कोन अछि? Multiplication अछि. Okay, so it is a algebraic expression. Clear? So now coming to the next part, that is differentiate between like term and unlike term. Okay, so we will differentiate what is a like term and what is an unlike term. Okay, so like term also known as sadrusha pada. Okay, sadrusha pada. Okay, and unlike term is known as adrusha pada. Clear? So we will first know what is like terms. Okay, what is like terms? Suppose there are two terms. Okay, suppose there are two terms. I can take x square. It is a term or it is an algebraic expression. Another term is 3x square. See, these are the different terms. It is x square and it is 3x square. And in these two cases, you see here the variable is x
I can say x. Here also the variable is x. Okay. Here exponent is 2 and here the exponent is also 2. Okay. Here coefficient is how much? Since there is nothing, 1 so I can write coefficient is 1 and here coefficient is 3. So this case को तुम्हें compare करो देखो in this two term which two are equal को दिरा जिनसे equal होची यार variable जहाँ यार भी variable से है कि नहीं यार exponent जहाँ यार भी exponent से है कि नहीं but एमान का coefficient different बुझियाला अब यही दुई प्रकार term को कहा जाए like term ताले like term कहाँ को है two terms are said to be like if they have same variable and they have same exponent जदि दुईटा का टर्म रो समान वेरिएबल थिबो समान एक्सपोनेंट थिबो कोएफिशिएंट जहां भी ही पारे दैट डजंट मैटर ओके ताल से मानो कहा जिवो लाइक टर्म तो लाइक टर्म कहा कहबा एनी टू टर्म ओके एनी टू टर्म्स हैविंग कोथरे इक्वल थिबो तनका वेरिएबल इक्वल थिबो ओके हैविंग इक्वल वेरिएबल and how could equal thibo exponent okay jodi duta term ro variable of exponent equal thibo then that two terms are known as like terms clear so ame bartan dekhi pariba je kiye like term au kiye like term nuhe suppose ame kichi example bartan neba y 3/2y 4/5 7y square 8y ओके सो इट केतरा टर्म अछि 5 टर्म्स ई पांचटा टर्म देखिबा को टर्म गडा का लाइक टर्म तो लाइक टर्म आपे कोन दरकार समान वेरिएबल दरकार समान एक्सपोनेंट दरकार देखियो यार वेरिएबल केते y यार वेरिएबल केते y यार वेरिएबल अछि कि नाही माने केते नै पाइबे y नै पाइबे y टू द पावर 0 नै हबनी 4/5 को हम लिखि पाइबे कि नै 4/5 into 1 सो लिख पाइबा 4/5 into y to the power 0 ओके सो यार भी वेरिएबल के सही y यार भी वेरिएबल सही y तमाने पांचटा जाका टर्म रो वेरिएबल समान अछि बर्तन देखिबा संगे एक्सपोनेंट समान अछि कि ताले यार वेरिएबल जहा यार वेरिएबल से यार वेरिएबल से यार वेरिएबल से यार नाउ सी इट हैज एन एक्सपोनेंट 1 ओके इट हैज एन एक्सपोनेंट 1 it has exponent 0 it has exponent 2 it has exponent 1 सो एमिति किसी टर्म अछि कि जो मान का वेरिएबल और एक्सपोनेंट समान हेतिबो हां अछि के देखो एटा 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 सो these are the three terms in which they have same variable and same exponent so they are known as like terms okay so like term में बाछि हबो आ गुडी जिंस वर्तन मन रखियार अछि जदी दुईटा टर्म like term हेइथांती then they can be added or subtracted okay suppose suppose x square and one more like term is 3x square see these two terms are like term they have same variable same exponent tale manu like term koi pariba jehetu like term man hei chenti tale jodi emanu ko ame add kariba tale se mane add hei jai paribe add hei kete debe dekhiba dekho यार कोएफिशिएंट केते 3 यार कोएफिशिएंट किछ नै माने हम केते लिख परिबी 1 लिख परिबी क्लियर नाउ एटा गोटे टर्म ये भी गोटे टर्म ये गोटे पद सेटा भी गोटे पद इन टू टर्म सबटो कॉमन कोटा अछि कहला x स्क्वायर कॉमन हैला कि नै सो x स्क्वायर कॉमन x स्क्वायर को ब्रैकेट भितरे बाहर को नै गली ब्रैकेट भितरे तले के रहगला x स्क्वायर को बाद दे दे एपटे के रहला 1 एपटे के रहला 3 तले x स्क्वायर बा 1x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 जा 4x स्क्वायर देखो जदि से माने लाइक टर्म हेइ थांते तले दुटा को मिसी के कोन देबे गोटे सिंगल टर्म देबे दैट इज 4x स्क्वायर क्लियर सो लाइक टर्म कैन बी added so you can write here like terms can be added or subtracted okay like suppose x or 2x plus 3x these are two terms
so they can be added to give a single term. 2 plus 3 is 5x. Okay, now coming to unlike terms. कहा को हमें unlike terms कहला हला जेमति like term होबा ପାଇଁ कंडीशन थिला जे वेरिएबल समान थिबो एक्सपोनेंट समान थिबो unlike term होबा ପାଇଁ कोन कंडीशन ना समान नथिबो ओके जदी दुईटा टर्म भितर आइदर सेमानकर वेरिएबल सेम नथिबो और सेमानकर एक्सपोनेंट समान नथिबो जे कोन जदी गोटे समान नथिबो देन द टू टर्म्स आर नोन एज unlike terms. Okay, if two terms having either, note down, either different variable or different exponent. जदि दुईटा टर्म रो वेरिएबल आइदर डिफरेंट थिबो और एक्सपोनेंट डिफरेंट थिबो ताहले हम समान कोन कहि परिबा अनलाइक टर्म कहि परिबा हला एग्जांपल नै बुझिबा देखो ଗୋଟେ एग्जांपल नबा 4x² ओके आ ଗୋଟେ नबा 7x³ ए देखो वेरिएबल केते x एठी वेरिएबल केते x ओके एठी एक्सपोनेंट केते 2 एठी एक्सपोनेंट केते 3 ताल देखिलो वेरिएबल जदियो समान अछि बट दे हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट ना नहीं मु कहि जदि डिफरेंट एक्सपोनेंट भी हेइथिबो ताले से दुटा टर्म कोन कहबा अनलाइक टर्म कहबा ताले हम लाइक टर्म हेबे कि नो दे आर अनलाइक टर्म ओके बिकॉज़ दे हैव डिफरेंट एक्सपोनेंट सला आउटे कथा मन रखियो पड़ियो जेंतिका जेहेतु माने अनलाइक टर्म सो दे कैन नेवर बी एडेड और सबट्रैक्टेड ता माने जदि हम ए दुटा टर्म को ऐड करिवा ताले माने ऐड हेबे सेमिति रहि जिवे जेमति अछन सेमति रहिथिबे सो नेक्स्ट एग्जांपल 8x³ okay and 8y³ here variable is x exponent is 3 here variable is y exponent is 3 okay so ए दुटा का टर्म भितर हम बर्तन कंपेयर करबा समान के एक्सपोनेंट समान अछि सो से माने एक्सपोनेंट जेत समान अछि पास करि गले कंडीशन रे सेकंड कंडीशन कोन थिला आइदर समानकर कोन थिबो वेरिएबल डिफरेंट थिबो देखिया यार वेरिएबल केते x it is the variable y so they have different variable since they have different variables so they are known as unlike terms so these two terms are unlike terms so बुझिया रे कहा को हमें लाइक टर्म कहबा एंड कहा को हमें अनलाइक टर्म कहबा जे तुमको लिस्ट आउट ऑफ many numbers by many terms देथिबो then we can easily find out which are like terms and which are unlike terms okay so now coming to the third part in this part we will going to know what is the various types of polynomial okay since polynomial are of various types but here we will basically study about 3 or more than 3 or 4 types of polynomial so let us find out what are the types of polynomial the first variant of polynomial is monomial okay so it is monomial the term monomial is derived from two words monomial केतरा वर्ड रो आसी दुईटा वर्ड रो आसी कोन कोन one is mono okay and another is nomial so these two terms are combined together to form monomial ये दुटा टर्म मिसी की monomial तैयार करछंती so monomial माने mono and nomial फर्स्ट जानिबे जे nomial माने कोन जेंति कि हम पढिले polynomial so poly गोटे टर्म nomial गोटे टर्म एक्जेक्टली एठी nomial रो मीनिंग कोन nomial माने होची टर्म ओके और ताको हम कहि परिबे algebraic expressions हमें ऑलरेडी पढी जे व्हाट इज एन algebraic expression so what is nomial nomial means term and what is mono mono means one okay so what is a monomial so monomial is a algebraic expression which contains one term बुझियला कि नहीं since monomial गोटे टाइप रो polynomial polynomial टा भी गोटे कोन थिला algebraic expression थिला तले monomial भी गोटे कोन हो algebraic expressions हो बट एई algebraic expression ने केतरा टर्म थिबो गोटे टर्म थिबो जदि गोटे टर्म थिबो ताको हमें कोन कहि परिबा monomial so जानि हला monomial कहा को कहबा so कहा कहबा
an algebraic expression which contains or having how many terms? Having only one term. Okay, jar gotti hi term thibo ba gotti hi पद thibo ताको हम कहबा monomial. Let us find out what are the monomials. Suppose I can take 3x. It is a monomial or not? Yes, it is a monomial because it is a single term. So it is a monomial. Clear? I can take 3y cube. It is also a monomial. Why? It is also one term. ताला को हमें कौन कहबा मोनोमियल कोइ परिबा काहे नत्र गोटी मात्र टर्म अछि और तारा वेरिएबल भी अछि कोएफिशिएंट भी अछि एक्सपोनेंट भी अछि जे कि पॉलिनोमियल कंडीशन को सैटिस्फाई करू छी आ किछ एग्जांपल हम देखि नबा अच्छा वर्तमान देखिबा कहला 2x plus 4x एटा मोनोमियल हबो कि मोनोमियल हबा पय कोन दरकार गोटे टर्म थिबा दरकार बट एटी केतरा टर्म अछि कहला दुईटा टर्म अछि बरा गोटे होची 2x आ गोटे की 4x सो एटा के भी गोटे मोनोमियल हे परिबो की अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ना एटा भी केबे गोटे मोनोमियल हे परिबो नाही काहे कि ना तर दुईटा टर्म अछि किंतु आ गोटे जिंस हम वर्तमान लक्ष्य रखा दरकार जो दुईटा टर्म हमें पाइले से दुईटा टर्म लाइक टर्म ना अनलाइक टर्म देखिबा देखो यार वेरिएबल के x यार भी वेरिएबल के x यार एक्सपोनेंट के 1 यार एक्सपोनेंट के 1 देखो दिस टू टर्म हैव सेम वेरिएबल एंड सेम एक्सपोनेंट जदि हम जानिथिले जदि दुईटा टर्म रो समान वेरिएबल समान एक्सपोनेंट थिबे ताले से मानको हम कहबा लाइक टर्म ताले 2x और 4x रे लाइक टर्म कि नहीं यस और एक कथा भी हम जानिछे दुईटा लाइक टर्म कैन बी एडेड दे कैन बी सबट्रैक्टेड और दे कैन बी एडेड ताले से मानको ऐड करी हबो बिकॉज़ दे आर लाइक टर्म सो 2x and 4x can be added to give 2 plus 4 is 6x देखो दुईटा टर्म मिसी गोटे सिंगल टर्म देले कि नहीं ताले वर्तमान हम कहि परिबा नहीं इटा गोटे मोनोमियल बोली यस इट इज ए मोनोमियल हला सो ताल देखि देई कहि देबन जे दुईटा टर्म अछि माने एटा मोनोमियल ही नथिबो नहीं जदि दुईटा एक लाइक टर्म हे दिबे ताले से माने मिसी जिबे आ मिसी गोटे मोनोमियल ते देबे बुझियला बट जदि अनलाइक टर्म थांता माने इति थांता 2x plus 4y है कि सो एठी भी केते टर्म अछि दुईटा टर्म अछि बट ए दुईटा टर्म लाइक टर्म नहंती सिंस दे आर नॉट लाइक दे आर अनलाइक सो दे कैन नॉट बी एडेड ताले माने एड हे परिबेनी जेमिति अछंती सेमिति रहबे ताले माने अंकर केते टर्म अछि दुईटा टर्म अछि दैट मींस इट इज नॉट ए monomial so you can find what is the monomial so you are clear about the concept of monomial so write it down. Then coming to next term that is binomial. Okay, it is binomial. Similarly, it is also coming from two words. One is bi, another is nomial. As we know, nomial means term. Nomial माने कौन? Term. Okay. तले bi माने कौन? Bi माने कौन? Double or 2 बुझियला सो बाइनोमियल गोटे कोन पॉलिनोमियल ता माने एटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एई प्रकार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रे केतेटा टर्म थिबो दुईटा टर्म थिबो बट मोनोमियल केतेटा टर्म रहउतला गोटे टर्म रहउतला एठी केतेटा टर्म रहइबो दुईटा टर्म तालार डेफिनेशन कोन एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल क्लियर सो वी कैन राइट एनी algebraic expressions having how many terms having two terms jara duita term thibo okay but important thing is that the two terms must be unlike se duita ek term unlike thiba darkar kahi jodi duita ek term like he jibe tal se man ko मिसे देबा मिसे देले से माने कोन हे जे मोनोमियल हे तो एटा हम टिके चेंज कर दो कोन ना एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू अनलाइक टर्म इट इज इंपोर्टेंट सो व्हाट इज ए बाइनोमियल
A binomial is an algebraic expression having two terms and that two terms must be unlike. Okay, so किसी example बर्तमान में देखिबा x plus x square एटा गोटे बाइनोमियल होबो ना होबोनी यार केटा टर्म अछि दुईटा टर्म हला बर्तमान देखिबा दुईटा का टर्म लाइक ना अनलाइक देखो मान को वेरिएबल यार x यार वेरिएबल केते x यार एक्सपोनेंट केते 1 बट तार एक्सपोनेंट केते 2 ताले एक्सपोनेंट डिफरेंट हे होछि जेहेतु एक्सपोनेंट डिफरेंट ताले मान कोन हम कहि परिबा अनलाइक टर्म कहि परिबे कि नहीं जेहेतु मान दुटा को अनलाइक टर्म ताले एटा गोटे बाइनोमियल बुझियला सो इट इज ए बाइनोमियल आउट एग्जांपल धरो 5y square plus 3y square ताले एटा भी गोटे बाइनोमियल हे परिबे कि नहीं हे परिबो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन देखिबा हो कि नहीं एठी केते टर्म अछि दुटा टर्म अछि one is 5y square out of 3y square so if 5y square है कि वेरिएबल के y एठी भी वेरिएबल y एठी एक्सपोनेंट के 2 एठी एक्सपोनेंट के 2 since they have same variable and same exponent so they are like or unlike they are like but condition कौन थिला दुटा का टर्म अनलाइक होवा दरकार since they are like so they can be added 5 plus 3 8y square ताले समान मिसी गले ताले केते टर्म बाहरला गोटे टर्म बाहरला so it is a monomial it is not a binomial so I think you can clear your idea about what is a monomial and what is a binomial okay so अब हम कहि परिबा binomial कहा को कहबा बुझिया कि नहीं so binomial होबा ପାଇଁ कंडीशन कोन थिला ना दुईटा टर्म थिबो आ दुईटा का टर्म कोन थिबो अनलाइक थिबो okay then coming to the next part that is polynomial that we are study about polynomial similarly it is coming from two words one is poly and one is nomial as we know nomial माने कोन nomial माने term okay poly माने कोन poly माने एक रु अधिक more than one एक रु अधिक more than one ताले what is a polynomial a polynomial is an algebraic expression चौथरे और which contains more than one term जहार गोटे रु बेसी टर्म थिबो ताको हमें कहि परिबा polynomial देखो एटा गोटे polynomial हे परिबा ना नाही हे परिबा polynomial काहे कि एटी केते टर्म अछि दुईटा टर्म अछि बुझियला दुईटा का टर्म जाको अनलाइक एटा को भी हमें बाइनोमियल कहि परिबा काहे ना बाइनोमियल रे भी एक रु अधिक टर्म थाए polynomial रे भी एक रु अधिक टर्म थाए so it is also known as polynomial so polynomial ha ପାଇଁ condition होछि एक रु अधिक टर्म so okay so this is all about monomial binomial and polynomial so besides this three types of polynomial there are also another two types of polynomial okay how do प्रकार polynomial अछि कोन कोन जानिबा so now we will look forward another two type of polynomial that is zero polynomial and non-zero constant polynomial okay so first hame janiba what is a non-zero constant polynomial for this we will take an example suppose हम पर example अछि 2 अच्छा जो 2 गोटे कोन constant ना variable it is a constant काहे कि 2 रो वैल्यू सब जगह रे 2 मैं इंडिया रे हो बा अमेरिका रे हो बा इंग्लैंड रे हो 2 वैल्यू इज ऑलवेज रिमेन constant so it is a constant एटा गोटे polynomial हे परिबो ना नहीं हमें प्रथम सेशन में पढ़ी दिले जे कोन से कांस्टेंट भी गोटे polynomial हे परिबो why because 2 can be written as 2 into 1 okay so 2 can be written as 2 into 1 so and for 1 we can write x to the power 0 काहेकि because x to the power 0 value केते 1 so एटा को हम लिखि पाले ना नहीं 2x to the power 0 ताला हम बर्तन कहि परिबा एटा algebraic expression बोली कहि परिबा because it has a variable it has a coefficient and has a exponent ताला variable अछि coefficient अछि exponent अछि ताले हम कहि परिबी 2 गोटे polynomial ना नहीं yes 2 is a polynomial okay so 2 गोटे polynomial करिबो आउट एग्जांपल हम नबा -3/2 अच्छा एटा नेगेटिव नंबर बट एटा गोटे कांस्टेंट ना नहीं it is also a constant negative integer गोटे okay so integer नहीं it is a negative fraction but it is also a constant okay काहेना -3/2 रे value always -3/2 okay बर्तन देखिबा एटा भी गोटे polynomial हे परिबो ना नहीं
हे परिबो काहे कि ना -3/2 रे हम 1 मल्टीप्लाई करले सही -3/2 पाइबा है ना जे कोन नंबर रे 1 मल्टीप्लाई करले वी विल गेट द सेम नंबर सो -3/2 in the place of 1 we can write x to the power 0 लिखि परिबा ना नहीं x to the power 0 लिखि हबो जेटा केते होला x to the power 0 हो गला बुझियला देखो एटी वेरिएबल भी अछि एटी कोएफिशिएंट भी अछि एटी एक्सपोनेंट भी अछि तले सब जाक कांस्टेंट भी गोटे गोटे पॉलिनोमियल ही परिबो बाय मल्टीप्लाइंग 1 एक गुण देले परे तमन हम पॉलिनोमियल कहि परिबा से माने पॉजिटिव होंतु बा नेगेटिव होंतु -3 भी गोटे पॉलिनोमियल काहे कि से -3 को लिखिबो एमिति का सो -3 x to the power 0 so all the positive constant all the negative constant are also polynomial and that polynomial are known as non-zero constant polynomial जेहेतु माने constant हम एटी constant यूज करले since माने polynomial तेनो हम एटी polynomial यूज करले non-zero माने कोन non-zero माने जे जीरो ही नथिबो जीरो को बाद दे दियो बाकी जहां भी नंबर अछि जति की भी पॉजिटिव नंबर अछि 1 गोटे पॉजिटिव नंबर 2 गोटे पॉजिटिव नंबर 1/2 गोटे पॉजिटिव नंबर हो कि नहीं 1.1 गोटे डेसिमल नंबर गोटे पॉजिटिव नंबर ओके सो 0 को छाड़ दे कि जति की भी तुम्हारा पॉजिटिव नंबर रहला जति की भी नेगेटिव नंबर रहला सेवन सो गोटे गोटे कांस्टेंट ओके सो दिस आर नोन एज नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्लियर सो वी कैन राइट all the positive and negative okay negative constants but zero को include करबे के ठीक ना इट इज जीरो इंक्लूड होबनी इसमें लिखि दोछि except zero all the positive and negative constants except zero are called so means are called non-zero constant polynomial बुझियल तो जति की भी कांस्टेंट अछन पॉजिटिव जति की भी नेगेटिव कांस्टेंट अछन जीरो को छाड़ दे कि समस्त को हम कहि परिबा non-zero constant polynomial ओके बुझियला तो नहीं सो 2 गोटे non-zero constant polynomial हे परिबो 5 की गोटे non-zero constant polynomial हे परिबो -3 गोटे non-zero constant polynomial हे परिबो -1/2 भी हे परिबो ओके 1.5 भी गोटे polynomial हे परिबो एटा कोन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट सो इट इज आल्सो a non-zero constant polynomial क्लियर तले बुझियला ए non-zero constant polynomial में कहा को कहबा बर्तन आगो जिंस देखो कि non-zero constant polynomial में बाहर कले एटा गोटे non-zero constant polynomial ये भी गोटे non-zero constant polynomial एटा देखला यार वेरिएबल x यार वेरिएबल x छाड़ देखो ना यार एक्सपोनेंट केते होची 0 होची कि नहीं यार एक्सपोनेंट केते होची 0 होची कि नहीं आ गुड एग्जांपल नला -5 सो -5 को हम लिख करियो -5 * 1 सो अटैक को हम लिख करियो -5 * x to the power 0 सो -5 टे गोटे कोन नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल अब यार एक्सपोनेंट केते 0 तले हम गोटे जिंस आठी लक्ष्य रखिले जे सब नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मानकर एक्सपोनेंट होची 0 बुझियला सो मोटा लिखि परिबी द एक्सपोनेंट and or their exponents okay is always 0 सेमान का एक्सपोनेंट सब बेले 0 ही होबो हला कि नहीं एटी भी 0 हला एटी भी 0 हला एटी भी 0 हेतला देखो बुझियला तो जहां भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होबो तार एक्सपोनेंट 0 होबो सो क्लियर नाउ कमिंग टू जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बुझा पड़छि जीरो माने कोन जीरो माने जीरो जीरो भी गोटे निजे पॉलिनोमियल बुझियला सो जीरो पॉलिनोमियल कहा कहबा केवल जीरो को हमें जीरो पॉलिनोमियल कहबा बुझियला कि नहीं एटी जीरो को हमें एक्सेप्ट बाद दे दोथले बट एटी जीरो इज इंक्लूडेड सो आई कैन से द नंबर जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल हैला जीरो को हमें कोन कह परिबा जीरो पॉलिनोमियल कहि परिबा ए सब को लिखि दियो ओके जीरो का हम कोन कहि परिबा जीरो पॉलिनोमियल एटी केवल जीरो इंक्लूड हबा ता छडा किछि भी न बुझियला जेमिति नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट केते होतला जीरो होतला बट यार एक्सपोनेंट केते हबो अनडिफाइंड ता माने हमें जीरो पॉलिनोमियल एक्सपोनेंट को बाहर कर परिबा नाही
So we can write its exponent cannot be determined. यार exponent को हमें बाहर कर पाएगा नहीं, cannot be determined, or we can say undefined. बुझे आपको खोजी की बाहर कर पाएगा, फिर हम तुम्हें आपको कौन कर पाएगा undefined हो पाएगा. So this is all about non-zero constant polynomial, zero polynomial.